Assalamu alaikum. Welcome to the second session of week 12. We were on week 12, that is specifically about, just a second, it's specifically about learning objectives, that is again linked with the overall concept of organizing. Now, what are the learning objectives? That is about chain of command, span of control, centralization and decentralization. Major हमारी ये 3 टॉपिक हैं that we will discuss in this session. Chain of command and all that इसको हम discuss कर चुके हैं in the first session. Staff authority, line authority को हम discuss कर रहे थे. That was the last session that we have discussed in the last video, जो आप लोग देख चुके होंगे last वाला clip. Now, key differences between the line and staff organization. What are the key differences? Already I have told you up to some extent. Again, we have to just go through from the main number of points. Like line organization can be understood as a vertical organization wherein the superior can give the order to the subordinate. So through direct chain of command, staff organization is the organization structure in which there is a normal departmentation of the regular business operation and there is the functional specialist to perform specialized activities. Right? So generally, whenever we are going through from all these things, like line organization or staff organization की बात की जाए, already we have discussed in the last session कि line organization जो concept है organizational structure के point of view से लिया जाए, तो line is about strong authority that is represented through strong line and its downward flow of information or flow of hierarchy and it's again supervisory in nature. So the line authority that relies on command, staff authority based on command and advices. So generally it rely on the command, but it's rely on the advice as well. जो staff होती है वो advisory in nature होती है. And we talk about, strictly we talk about the discipline when we are talking about line authority, and in staff it is comparatively bit loose. We can't say it's a strong way of you can say flow of instructions or command, because you are giving the advice to the top level management. That is the reason it's advisory in nature. In a line organization, the line executives are the generalist, while in staff they are the specialist. Specifically, they are going to give the advice to the line manager, right? So generally, जैसे legal department होता है, auditors होते हैं, account departments होते हैं, research and development, they are the specialist individuals, and that is a specialist department, and they can give the advice to the CEO of the organization. So that can be the, what we can say, that is about staff organizational concept. There is a centralization of authority in a line organization, and so all the decisions of the organizations are taken by the top authority only. And generally in staff organization, most of the time when we are talking about the combination of line organization and staff organizational concept, centralization or decentralization कहाँ lie करती है और उसको कैसे हम link करते हैं. Generally, when we are talking about centralization, that means we are talking about line organizational concept, because top level management का concept आता है line के साथ, they are the commanding person और उनके पास सारी authority होती है. और decentralization में आपकी downward आ जाती हैं बहुत सारी चीजें. तो समटाइम्स हम दोनों को टॉप अथॉरिटी और जिसमें लाइन और स्टाफ को दोनों को डिफ्यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में यूज कर सकते हैं. लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज गुड फॉर स्मॉल कॉर्पोरेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम. जनरली इट्स गुड फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. जनरली आपका दिस वन इज द स्ट्रक्चर, and staff authority is you can say requirement, and that is good for the what we can say, that is about staff that is about what we can say another type of organization, that is about large corporations or organization. जब आपकी large organizations होती हैं और उनका setup comparatively बड़ा होता है, तो उसमें आपकी staff organization के point of view से, जैसे legal department होता है आपका, ऑडिटर्स होते हैं, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, उनके लिए मैनेज करना या एडवाइस करना कंपैरेटिवली इट्स अ बेटर वे. जनरली लो लेवल पे या छोटे लेवल पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड वन, सो दे हैव टू गो फॉर द large organization, and when they have maximum, you can say, expertise, skills and knowledge, so they can give the advice to the top level management as a staff authority or as a staff organizational structure.
Okay, so that one that was about overall line and staff authority concept. Now, what's the differences between line and staff organization? Line organization can be understood as vertical organization, whereas the superior can give the order to the subordinate through a direct chain of command. Staff organization is the organizational structure in which there is a normal departmentation of the regular business operation, and there is the functional specialist to perform the specialized activities. So generally, they are here to perform the functional specialist to perform the specialized activity. So line organization को जब हम कहते हैं, ये हम सारा इसको डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी. तो स्पैन ऑफ कंट्रोल की हम बात करते हैं. स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर हम डेफिनेशन की बात करें, very simple definition and very simple concept and very important concept, and it's the opposite of scope of management. Scope of management क्या है, span of control क्या है, दोनों का हम difference देखते हैं और comparison देखते हैं. Now what is span of control? Word span is about overall jurisdiction, overall आपकी what we can say number of individual, how many number of individuals working under each manager, like the amount of employees directly reporting to a manager or superior. That is about span of control, कि एक manager के अंदर कितने लोग जो है वो directly reporting है, इसको हम कहते हैं that is about span of control. Determining the span of control is important because to a large degree it determines the number of level and managers in an organization, and important consideration is in how efficient an organization will be. All other things being equal, the wider or large the span, the more efficient an organization is. जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाइड होती रहती है, लार्ज होती रहती है, उसी के साथ साथ आपका जो काम है एफिशिएंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको हम बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं. और जनरली व्हाट्स द डिफरेंस, जनरली हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट पे इट्स अबाउट वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा लोग होते हैं. आप टॉप पे बहुत कम क्यों होते हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट में ज्यादा लोग क्यों होते हैं? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे जनरली हम कहते हैं पीएचडी लोग बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली. अगर स्कूल गोइंग देखें या यूनिवर्सिटी लाइफ देखें तो पीएचडी हर कोई स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज देम. हर इंडिविजुअल के साथ एक डॉक्टर होना चाहिए, उसकी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इतने ज्यादा लोग, थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल को एक बंदा टैकल करे. जबकि आपके बैचलर में या जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल एंड कॉलेज, तो वहां पे एक ही टीचर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को एक साथ इंस्ट्रक्शन दे सकता है. सो इसी तरह जो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसका नेचर ऑफ वर्क कम्प्लेक्स होता है, सो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल कंपैरेटिवली कम होता है. दैट मीन्स एक दो लोग होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्होंने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं और बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, सो दे हैव टू गो फॉर इट, जो आपका स्पेशलाइज्ड फॉर्म है. लेकिन अगर हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ जाएं तो उसमें जनरली आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्रॉडर होता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्जर या ब्रॉडर क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड होता है उनका वाइडर हो जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल और ज्यादा एफिशिएंसी हो जाती है. सो फॉर दैट रीजन देन दे हैव टू गो फॉर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है. और आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो डेली रूटीन वर्क होता है, सिंपल रूटीन वर्क होता है, उसमें ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, लेबरर होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, आपके टेक्निकल इंडिविजुअल्स, लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, वहां पे लोग ज्यादा होते हैं बिकॉज आपका डेली बेसिस पे जो काम है वो ज्यादा करना होता है, तो इसलिए और इजी होता है. वन पर्सन कैन हैंडल एवरीवन. जैसे मिडिल लेवल मैनेजर है तो वो हैंडल कर लेता है सबको, तो दैट इज द रीजन इज कंपैरेटिवली इजी टू मैनेज इट. सो लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम करना इजी होता है, रूटीन नेचर ऑफ वर्क होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कम्प्लेक्स नेचर ऑफ वर्क होता है, उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं, प्लान लेने होते हैं, करने होते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखना होता है. ये सारे डिसीजंस जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है. इसलिए टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, एक्सपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव टू बी स्ट्रांग. तो वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में, दैट इज द डिफरेंस. अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो आपका that is toward what we can say about that is about specifically about routine nature of work and simple nature of work and daily routine basis पे जो काम असाइन किया जाता है वो करना होता है. इसलिए इट्स इजी टू मैनेज, इजी टू हैंडल, तो इसलिए यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं. So what is span of control? Refers to the number of subordinate under the manager direct control. Already we have discussed. इसी तरह ये example दी हुई है कि just like this is the span of control 1 है and this one is about, अगर इसके CEO के अंडर देखें तो कितने लोग हैं? 3 individuals are working under that specific person.
तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है इस स्पेसिफिक डायरेक्टर का या सीईओ का, दैट इज अबाउट 3। सो वहां पे आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉप पे ज्यादा है, सॉरी कम है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में ज्यादा होता है। सो टू मैनी आर टू फ्यू रिपोर्ट्स इज गुड वे टू view how efficient an organization is long as it looked at in the context of the company organizational structure, कि ओवरऑल कंपनी के और कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इट्स अबाउट हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, इट्स अबाउट फ्यू इंडिविजुअल्स आर directly reporting to the top level management, so sometimes it will be considered as a good way. How many direct reports can manager have? Just like in this way, just like आप इधर देखें तो we are talking about टोटल हमारे पास जो है वो इट्स अबाउट 34 इंडिविजुअल, टोटल स्पैन ऑफ कंट्रोल 34 है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, और ये सारे बाय द वे अगर हम ये देखें तो ये सारे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विद दिस इंडिविजुअल, राइट? दैट इज द रीजन ये स्पैन ऑफ कंट्रोल ओवरऑल स्पैन ऑफ कंट्रोल है, दैट इज अबाउट वेस्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो भी एरिया उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है 34 है। अगर यही वाले स्पैन ऑफ कंट्रोल हम 1 by 1 चलते तो अकॉर्डिंगली हमें हर इंडिविजुअल का स्पैन ऑफ कंट्रोल अलग से बताना पड़ता। सो इज देयर एन ऑप्टिमल नंबर? व्हाट नीड टू बी कंसिडर्ड इन द नेचर ऑफ द वर्क दैट सबऑर्डिनेट आर परफॉर्मिंग एंड हाउ मच अटेंशन ईच रिक्वायर्स, किस तरह जाना है, कितनी अटेंशन रिक्वायर्ड है, कितना काम करना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी नंबर 100 over 100 which executive functions with high degree of collaboration and interaction. It could productively tolerate no more than 3 or 4. So the nature of the work being performed and how much attention it requires should given the assignment of the personnel to the manager and not some industry ideal goal, right? So that is one of the way in which we can say that is about one of the ideal way through which we can discuss with the individuals के हमारे पास कितने लोग हैं और क्या है। एक जनरल एग्जांपल दी हुई थी, expanding on the concept of span of control. This one is about flat organization and tall organizational structure. Generally, what's the difference? While we are addressing span of control, it's broaden our understanding to see in the context of organizational structure, level of hierarchy and all that. Width क्या कहती है और height क्या कहती है जी? Width organizational structure can be described as a wide or narrow. That means इसका broader है, और अगर वर्टिकल देखें तो वो इस तरह आपके पास वर्टिकल सिचुएशन में नैरो है या नहीं है। एज देयर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन में भी टॉल। सो जहां पे फ्लैट होता है वहां पे कहते हैं हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ व्हाट वी कैन से डिपार्टमेंट्स, ओवरऑल स्ट्रक्चर नैरो है, वाइड है, या व्हाट वी कैन से डिपार्टमेंट्स एक ही लेवल में ज्यादा है। लेकिन जहां पे हम वर्टिकल की टॉल की बात करते हैं तो वर्टिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहाँ ज्यादा होते हैं, कहाँ कब फ्लैट होता है, कब टॉल होता है, वी हैव टू राइट नाउ फाइंड आउट। सो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड टॉल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। जो आपकी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। ये देखें यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो और कब होंगे, जब नेचर ऑफ वर्क इजी होता है कंपैरेटिवली, तो वहां पे आपकी फ्लैट होता है। लेकिन टॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्पैन ऑफ कंट्रोल कंपैरेटिवली नैरो हो जाता है डे बाय डे, और ओवरऑल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक इंडिविजुअल को रिपोर्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें सॉरी, तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, 3 इंडिविजुअल्स आर सॉरी 2 individuals are working under that specific CEO or head of the organization। और ये वाला जो A है, suppose we can say A manager है, ये B manager है, right? So A manager के अंदर again we have 2 persons, right? और फिर इसके अंदर A1 कह देते हैं, इसके अंदर again we have 2 persons, फिर इसके अंदर 1 2 3 4 1 2 persons अगेन इसके अंदर है, इसके अंदर अगेन 2 person है, इसके अंदर अगेन 2 person है। तो ओवरऑल इट्स अबाउट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन दैट लेवल। अगर लेवल वाइज इसको देखा जाए तो ये फर्स्ट 1 है जी, पहले लेवल पे जो लोग हैं 1 है, दूसरे पे 2 लोग हैं, तीसरे पे 1 2 3 4 हैं, हमारे पास 2 4 हैं, फिर 4 के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 is on third level, and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 is about fourth level, 16 है हमारे पास, और 16 में 2 4 6 8
2, 4, 6, 8 and same. That means it's about 32 at the lower level. So this is how we can make. अब अगर इसी hierarchy को देखें तो 1, 2, 4, 8, 16, 32. So this one is the structure, right? यहाँ से 1 से लेके आप क्या जा रहे हैं 32 तक जा रहे हैं. So this is how it goes toward, you can say, broader form. कि आपका जैसे जैसे आपकी लेवल डाउन होती है आपका ब्रॉडर होता जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जाते हैं आपकी नेचर ऑफ वर्क स्पेशलाइज हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, टेक्निकल होता है. तो यू नीड स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज पर्सन. तो इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो श्रिंक हो जाता है. लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रॉडर होता है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. So our company structure must be designed to suit the business, the customer and the market, and in a way that fits with the workforce capability as well. So it fits with the workforce capability overall, whatever the structure is, accordingly you have to work for it and you have to go for it and then you have to manage it. So this one is the concept tall and flat organization. What's the positive and negative points for the flat organization and the tall organization? It encourages the delegations, right? Manager must better delegate to the handle large number of subordinate and grant the opportunity for subordinate to take on the responsibility. So it encourages the delegations generally to delegate the responsibilities. जो आपका flat होता है, manager must better delegate the handle large number of subordinate. बहुत ज्यादा लोगों को आपने और responsibilities भी ज्यादा होती हैं. It improves the communication speed and quality because एक दूसरे के साथ आपने coordinate करना होता है. Reduce cost because fewer level of managers होते हैं या management होता है, तो it will reduce the cost. It helps to prevent the workforce from disengaging by focusing on empowerment, autonomy and self-direction. So there is no need to disengage the individuals by focusing on empowerment, autonomy and self-direction पे just focus करें. So उसमें that will be like आपका जो फोकस होता है वो दैट इज स्पेसिफिकली अबाउट आपने जो भी एम्पावरमेंट है उसको से कैसे आपने एक सेल्फ डायरेक्शन पे कैसे काम लेना है. So what are the positive and negative points? High managerial workload come with high span of control. Role confusion more likely, like may cultivate distrust of the management. So high managerial workload comes with high span of control. So जैसे जैसे आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका मैनेजरियल वर्कलोड जो है वो आपका डेफिनेटली बढ़ जाता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल जब बढ़ता है तो ये ड्रॉबैक है, वी नो वेरी वेल कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल दैट मींस नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि कितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं. अगर मैं 10 लोगों से काम ले रही हूँ तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल 10 है. अगर मैं 20 से लूंगी तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल 20 है. लेकिन मेरा एम्प्लॉय आगे से 20 और लोगों से ले रहा है तो ये मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं है. दैट मीन्स मैं कहूँ मेरे टोटल 40 लोग हैं. नो, दैट स्पैन ऑफ कंट्रोल इज ऑफ दैट स्पेसिफिक एम्प्लॉय. वो 20 लोगों से काम ले रहा है तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 20 है. मेरा 20 रहेगा जो मैं अपने लोगों से काम ले रही हूँ. सो दिस इज द डिफरेंस. सो रोल कंफ्यूजन मोर लाइकली, जनरली रोल कंफ्यूजन होता है अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल भी ज्यादा हो. और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जनरली ज्यादा होता है बिकॉज नंबर ऑफ यू कैन से डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजर्स होते हैं एट सेम लेवल, तो समटाइम रोल कंफ्यूजन होता है. इट मे कल्टिवेट डिस्ट्रस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड दैट विल यू कैन से इंक्रीज द डिस्ट्रस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल बिकॉज जब रोल कंफ्यूजन होती है तो प्रॉपरली काम नहीं हो सकता है. सो दैट इज अबाउट व्हाट वी कैन से that is about span of control overall with relevance to flat organizational structure. और चेन ऑफ कमांड से ही रेलेवेंट था आपका अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट, स्टाफ अथॉरिटी एंड लाइन अथॉरिटी. और इसी को हम स्टाफ डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट कहते हैं. और इसी को हम लिंक करते हैं विद line authority is basically the head of staff department and line department as well. So इस कॉन्सेप्ट को हम क्लास में भी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और कर सकते हैं. So that is about what we can say this session. It's about second clip I think. So काफी डिटेल में हो गया. अभी हम थर्ड स्टार्ट करते हैं and then we will discuss about the tall versus flat organization. और इसका हम पहले फ्लैट का हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स प्रॉन्स एंड कॉन्स देखे. अब
नेगेटिव सॉरी अब हम टॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू सो मच क्लास.